Is my screen visible? Okay. So, how many of you have given today's contest? Okay. So, let us start with the discussion. First, the problem number A, which says Alice and Bob are playing a two-round game and they have a primary score and secondary score. So, how do we decide the winner? That if the player has a greater primary score, then he wins. And if the primary scores are equal, then we compare them with the secondary score. And if both the scores are equal, Alice wins because she registered first for the game. So this is a very basic problem. We just need to write if-else conditions. Whatever is given in the problem, we just need to write if-else conditions for them and you get the answer. So I guess anyone is not having any doubt with it. Is it clear? See, you have just, the conditions are given, you just need to formulate them in if-else conditions. So let us move to the next problem. Here it is given, we are given a string S of length n, which has only characters A and B, and we need to count the number of A's and B's in S. So we have multiple test cases here, and the strings have just A and B. We need to count them. Just take two counters, run a for loop, and if S of I is equals to A, then we make the counter one increment, and if it's equals to B, then we increment the counter 2, and finally we print both the counters. So, and we are doing it for all the particular cases. There are in t-test cases. So I guess this is clear. Anyone is having any doubt? Okay. So moving on to the next problem. Here it is given, there are n people standing in a line where the ith person has a friendliness value of ai. So we are given an array A where the friendliness values of persons are given. Now we have to arrange them in a circular table and the sitting arrangement should be comfortable. So when do we call an arrangement comfortable? Such that when every person has at least one of its neighbor whose friendliness value is less than or equal to their value. So since it's a circular table, every person has two adjacent like neighbors. We need to check if any of the values of its adjacent neighbor is less than or equal to their value. Then it is a comfortable arrangement. We need to make every element comfortable. So we need to print if we can make the arrangement valid or not, like make all the elements comfortable or not. See here in the test case, we have an array 3, 1, 2, 1, and then we are outputting yes. Now, why is that so? Let me show you just a bit. Just wait for a second. Now we can arrange this like 1, 1, 2, 3. And you see in this arrangement, every element is comfortable because 1 has a value which is equal to it on its right hand side. 3 is of course greater than 1 because since it's a circular arrangement, 1 is adjacent to 3. And you can see all the elements have at least one element less than it in its adjacent. So when does the condition come that we don't have like
a comfortable element. You see, in all other elements, like we can make them comfortable because we have a value lesser than them. But the problem comes with a minimum element. Let's take this example like 513, 513. Like, however we arrange it, we can never get an element which is lesser than or equal to 1, which is the minimum element. Like, we can place it at the back, at the front, anywhere we can do it, but we are never finding an arrangement where we get any element which is lesser than or equal to it. So, what do we need for that? Like, how can we make one comfortable? To make one comfortable, we either need a value less than it or equal to it, as per the question. So, since 1 is the minimum element, we cannot have a value less than it, right? So, since we cannot have a value less than it, we should have another value which should be equal to the minimum value. So, the problem sums up to finding the frequency of the minimum element. And if the frequency is greater than or equals to 2, then the all the elements can be arranged in a valid arrangement. You can arrange if we have the minimum element in a frequency less than or equals to 2, we can arrange them in like uh, we can place them in any order, but all the minimum elements should be together. So as you can see, this is also valid arrangement. 3 has 1 which is less than it, 1 has 1 which is less than it, 5 has 1, and everything is comfortable. So the problem is just find the frequency of the minimum element. If it's greater than equals to 2, then we print yes, and if it's not, then we print no. So is it clear? Anyone is having any doubt with it? Okay, so did anyone have any other approach? You can share it. Okay, so the next problems will be discussed by Sujal. Okay, so moving forward, we will be discussing the problem C and D. Let me share my screen. I hope I'm audible and visible. If that's the case, let's move on to the problem itself. The problem C was binary snail. Did anyone try to solve it out? You can react with the thumbs up or unmute if you can and share your approach. Okay, so I will be moving forward. The problem sets we have two strings A and B given, both are of length n, and then we have to somehow reverse the strings, substrings basically of A, and then convert A to B. And what are the condition for reversing a substring of A? That it contains at most one, that there should be at most one, right? वन वाला जो फैक्टर है वो एक ही और आना चाहिए, तभी रिवर्स कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. And we have to return the minimum number of operations for it. Okay, so n was given up to 10 to the power 5. Same for test cases. So this was the problem. Let me discuss it with you, my approach, what I was able to think of during the contest. So let us consider this is the string. This is the string A, and this is the string D.
ये and these are both of length 6, right? The length over here is 6. Similarly, for here, the length over here is 6. So what you need to observe over here in the problem is, uh, like if there is a index specifically set, like A में भी अगर वो 1 हो, B में भी अगर वो 1 हुआ, वो वाला इंडेक्स पे, like I can reset the problem. लाइक मुझे यहाँ पे एक इंडेक्स ऐसा मिल गया जहाँ पर ए में भी 1 है, बी में भी 1 है, देन आई कैन ट्रीट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? लाइक ये वापस से प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है, सॉर्ट ऑफ रिकर्शन जैसा हो गया ये। तो अगर मुझे ऐसा कोई इंडेक्स अगर मिलता है जहाँ पर ए में भी 1 है, बी में भी 1 है, इफ देयर एग्जिस्ट सच एन इंडेक्स, वी कैन convert this string to this string with the number of ones required, मतलब जितने वंस है इसके अंदर बेसिकली उतने हो जाएंगे। लाइक लेट मी शो यू द एग्जांपल फॉर इट एंड व्हाई दिस वर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम क्यों करता है? सो लाइक ऐसा इंडेक्स मेरे को मिल गया जहाँ पे ए में भी 1 है, बी में भी 1 है। अब कोई इसको चेंज करने की दरकार तो है नहीं। सो इसके पहले कितने वंस है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, राइट? सो लाइक अगर यहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ वंस होते तो दिक्कत होता, लेकिन यहाँ पर सेम नंबर ऑफ वंस है इसके पहले तक, तो सही है सब कुछ। Like if I can focus on this substring, the first two factors of the substring basically, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 0 1 है, तो मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि यहाँ पे तो एटमोस्ट 1 ही है, एक ही 1 है यहाँ पे, तो मैं इसको रिवर्ट कर सकता हूँ, रिवर्स कर सकता हूँ बेसिकली। तो ये 0 1 ऐसे टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं ये वाला सबस्ट्रिंग भी चूज करूँ तो भी ये कन्वर्टेबल है, 0 1 यहाँ पे। सो एनी हाउ लाइक एक 1 को मैं हमेशा कन्वर्ट कर ही सकता हूँ एक ऑपरेशन में। तो एक एक 1 के लिए मेरे को एक ऑपरेशन चाहिए, जब तक कि ए और बी में सेम इंडेक्स पे 1 आ जाए। देन उसके बाद वापस से मैं यहाँ पे चेक करूंगा, काउंट कर सकता हूँ कितने वंस है। लाइक ये नंबर ऑफ वंस पे डिपेंड कर रहा है लगभग, अगर तुम देखो तो। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। लाइक यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने थे? यहाँ पे 2 थे ना नंबर ऑफ वंस। तो मैं एक एक 1 को मैं एक ऑपरेशन में कर सकता हूँ, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन हो जाएंगे यहाँ पे 2 हो जाएंगे। इसको मुझे चेंज करने की कोई दरकार है नहीं। सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। एक एग्जांपल टेस्ट केस भी डिस्कस कर लेते हैं, बेटर रहेगा। यू कैन सी दिस एग्जांपल टेस्ट केस, यहाँ तो कोई वन ही नहीं है एंड पूरा ए जो है बी के बराबर ही है, तो यहाँ पर तो ऑपरेशन 0 ही लगेगा। एंड फॉर दिस वन ऑल्सो ए जो है पूरा बी के बराबर है, सो यहाँ पर भी ऑपरेशन 0 लगेंगे। फॉर दिस वन, राइट, द नंबर ऑफ वंस इन ए एंड द नंबर ऑफ वंस इन बी आर इक्वल्स, सो मतलब बराबर है ना, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को। सो लेट मी टेक अप दिस एग्जांपल एंड दिस वन ऑल्सो। यहाँ पर भी ए में वन जो है 2 है, बी में भी वन जो है 2 है, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर दिस एग्जांपल, जहाँ पे ए में 2 वंस है एंड बी में एक ही 1 है, तो ये एनी हाउ कन्वर्ट नहीं हो सकता ना बी में ए। चाहे तुम रिवर्स करो या कुछ भी करो, नंबर ऑफ वंस तो एक्स्ट्रा नहीं बढ़ जाएंगे। तो इस कारण से यहाँ पे आंसर जो है -1 आएगा, एंड यू हैव टू प्रिंट दिस स्पेसिफिकली। सो लेट मी डिस्कस दिस 1 0 0 and the string b was
Please wait for a few minutes. We'll be starting back very soon. Okay, so I think we have had enough of the break. So let me start it again. I hope I am audible and visible. Let me share our problem. So this was the problem statement, right? We were discussing about this case particularly. So uh, so we have drawn A and B would be 00101. So this was the string B. Uh, these are both of length 5 as stated in the problem. So let me discuss the solution for this case. Then you will understand how we can generalize it. Uh, like, let me guess. There is a one over here in the third place, like, and I don't have any one before it. Like first पे ही है, third से पहले तो. So I can reverse this completely. तो ये हो जाएगा. So मतलब एक वन को मैं एक ही बार में कर पा रहा हूँ एक स्टेप में. एंड सेकंड मतलब इसके लिए कर सकता हूँ कि इस वाले पार्ट को रिवर्स कर दूँ तो हो जाएगा. सो इसका आंसर टू होगा. तो लॉजिक के हिसाब से अगर जाए तो लाइक एक भी इंडेक्स मेरे को नहीं मिल रहा जहाँ पर कि ए में भी वन हो बी में भी वन हो. तो उसके पहले मतलब नंबर ऑफ वंस भी सेम होने चाहिए उस केस में. लाइक यहाँ पे दो ही वन थे, यहाँ पर भी दो वन थे उस इंडेक्स से पहले तक. तो यहाँ पे वैसा कोई नहीं मिला तो मतलब नंबर ऑफ वंस के बराबर ही हो जाएगा.
then we will have to discuss this test case better to understand it. Take some notes. वो टेस्ट केस था, ये था 1.0, डी था 0. सो अगर मैं आइट्रेट करूँ यहाँ से, लेफ्ट साइड बेसिकली आइट्रेट करूँ, यहाँ पर एक 1 है एंड यहाँ पर एक 0 है, तो मुझे अभी ऐसे कोई नीड नहीं लग रहा चेंज करने का. लेकिन यहाँ पर मुझे एक ऐसा इंडेक्स मिलता है जहाँ पे ए में भी 1 है, बी में भी 1 है. लेकिन मेरे कंडीशन में क्या था कि इसके पहले नंबर ऑफ वन जो है सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम है नहीं बेसिकली. लाइक अगर तुम मैप करना चाहोगे वंस को, तो ये ऐसे कुछ मैप हो रहा है कि ये वाला वन का जो प्लेस है, मतलब पहला वन ए में यहाँ पर है, तो पहला वन बी में यहाँ पर है, सेकंड वन ए में यहाँ पर है, तो सेकंड वन बी में यहाँ पर है. लाइक ये ऐसा कुछ मैप हो रहा है ना. सो तो उस हिसाब से मेरे को वैसा कोई इंडेक्स मिला नहीं जहाँ पे दोनों में सेम हो. तो इस केस में भी मैं नंबर ऑफ वन ही आंसर होंगे बेसिकली. लाइक मैं इस वाले वन को चेंज कर देता हूँ. लाइक इस वाले वन के लिए मैं इस सबस्ट्रिंग को रिवर्ट कर सकता हूँ, रिवर्स कर सकता हूँ basically. तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा एंड यहाँ पे एक वन रहेगा, तो ये सेम हो गया. एंड देन मैं इस वाले को मैं अगर रिवर्स करना चाहूँ तो हो जाएगा. तो ये नंबर ऑफ वंस के बराबर ही हो गया 2. तो ऐसे करना है लाइक, अगर जनरलाइज किया जाए इसको थोड़ा, तो we'll see the general version. लाइक कहीं पे वन होंगे, कहीं पे जीरो होंगे स्ट्रिंग में, लाइक ऐसे कुछ होगा. वन जाएगा फिर यहाँ पे वन देता है. सो बी में भी ऐसे कुछ होगा एंड वी क्रिएट टू वेक्टर्स ऑफ पोजिशंस, कि कहाँ कहाँ पे वन है, कहाँ कहाँ पे वन नहीं है. जैसे मान लो यहाँ पर कुछ पोजीशन आया, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है, ठीक है. तो इसके लिए भी ये फर्स्ट प्लेस पे होगा, सेकंड प्लेस पे होगा, थर्ड प्लेस पे होगा, फोर्थ प्लेस पे होगा, कहीं ना कहीं कुछ होगा. एंड लेट्स से कि ये वाला पार्ट जो है सेकंड प्लेस में जो है इंडेक्स सेम हो गया, कि मतलब ए में भी वन है सेकंड प्लेस पे, बी में भी वन है. सो इसके पहले तक का तो नंबर ऑफ, मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही आंसर होंगे. सो इस हिसाब से ही करना है. लाइक मैंने समझा दिया. सो दिस वुड बी द कोड फॉर इट जो मैंने सबमिट किया था. स्ट्रिंग मैंने इनपुट ले लिया एंड देन ये C1 काउंट करेगा नंबर ऑफ वंस इन ए स्ट्रिंग एंड C2 काउंट करेगा नंबर ऑफ वंस इन स्ट्रिंग बी. एंड देन यहाँ पे सेट मैंने किया है लाइक इंडेक्स को स्टोर करने के लिए, कि कहाँ पर लाइक फर्स्ट वन मेरे को मिलेगा, फर्स्ट इंडेक्स मिलेगा बेसिकली जहाँ पर ए में भी वन है, बी में भी वन है एंड इसके पहले के सारे सेम है. सो मैं यहाँ पे वन काउंट कर रहा हूँ, सेट में इंसर्ट भी करते जा रहा हूँ. बी के लिए भी वन काउंट किया, सेट में इंसर्ट किया. एंड देन अगर नंबर ऑफ वन से अगर बराबर नहीं है तो -1 रिटर्न कर दूंगा. वो तो हमेशा ही पॉसिबल नहीं है, राइट. सो एंड अगर बराबर है तो मैं वो पोजीशन चेक करते जाऊंगा, लाइक आई विल इटरेट थ्रू एवरी इंडेक्स ऑफ इट, कि कहाँ पर सेम है. तो मैं बेसिकली स्ट्रिंग बी का भी पहला निकाल रहा हूँ कि स्ट्रिंग बी का करंट पोजीशन निकाल रहा हूँ कि मैं भी कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं. एंड देन उसके पहले तक का मैं काउंट कर रहा हूँ, तो ये वैसे ही रन कर रहा है. सो दिस वाज द कोड फॉर इट. सो ये प्रॉब्लम हो गया. अब लेट मी डिस्कस द प्रॉब्लम डी. सो प्रॉब्लम डी है पार्टीशन. डिड एनीवन ट्राई टू सॉल्व इट? किसी से सॉल्व हुआ था ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट या कुछ अप्रोच हो अच्छा? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. प्रीतम बेसिकली प्रॉब्लम काफी इजी था अगर थोड़ा देखा जाए तो. और कोई है जिससे सॉल्व हुआ था प्रॉब्लम? सो मैं डिस्कस कर लेता हूँ. सो पार्टीशन में बोल कह रहा है कि हमें एक एरे दिया हुआ रहेगा एन इंटीजर्स का, एंड लाइक एन इंटीजर्स को हमें पार्टीशन करना है बेसिकली. कुछ सब एरे से पार्टीशन करना है एंड लेट देम बी b1 b2 b टिल bx, लाइक x सब एरेज हो गए एंड दे शुड बी कंटिन्यूअस, राइट, कि मतलब
अगर उन सब एरर्स को अगर मैं जोड़ूँ तो मुझे ए ओरिजिनली मिल जाए पूरा। एंड देन हमें यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन की है बेसिकली, जी ऑफ बी आई। फॉर एनी सब एरे बी आई, जी ऑफ बी आई रिप्रेजेंट करेगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इन बी आई क्या है। मतलब सबसे मोस्ट ऑकरिंग एलिमेंट कौन सा है बी आई सब एरे का, बेसिकली जी ऑफ बी आई ये है। एंड एक फंक्शन और डिफाइन किया गया है, स्कोर बेसिकली ऑफ द एरे, कि सच बी आई का मतलब कि अगर हम पार्टीशन कर रहे हैं एक्स सब एरेज में, देन एक्स सब एरेज के लिए अगर हम उसका जी ऑफ बी एक्स निकाले, जी ऑफ बी आई निकाले बेसिकली, एंड उनको ऐड कर दे तो कितना होगा, लाइक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इन द सब एरे। उसको ऐड किया तो कितने डिस्ट्रिक्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ हमें मिल सकते हैं। तो यही हमारा निकालने का था। तो इसको कैसे निकालते हैं डिस्कस। लाइक एग्जाम्पल तो कुछ खास दिए हुए भी नहीं है। एग्जाम्पल बेटर हो सकता था इस प्रॉब्लम का, बट सो लेट मी मूव ऑन टू दिस। कैसे सोच कैसे सोच लाइक मैंने एक जनरल एरे बना के ट्राई किया था समझने का। सो लाइक एक एरे मान लिया मैंने, इसमें कुछ यूनिक भी होंगे एंड कुछ रिपीटिंग भी होंगे। सो लाइक थ्री को मैंने रिपीट करवा लिया था, दो तीन बार मान लो रिपीट करना कुछ भी। लेट्स से दिस इज द एरे सम, and then we try to break it into some sub arrays, and then let's check the score for it. Let's say we break it down into here, uh, यहाँ पर भी तोड़ लो, and then ओके सो मतलब इतने ही सब एरेज रखते हैं, तीन ही सब एरेज रखते हैं। uh, इस पॉइंट के लिए, इस सब एरे के लिए जी ऑफ कितने, जी वाला फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। लाइक इसमें तो एक ही वन है एंड कोई और एलिमेंट तो है नहीं, तो मोस्ट ऑकरिंग एलिमेंट कौन सा हो गया, वन हो गया। मोस्ट ऑकरिंग एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी बेसिकली, यहाँ पर भी मोस्ट ऑकरिंग एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी कितना बनी है, टू भी एक ही बार आया, थ्री भी एक ही बार आया, तो यहाँ पर भी ये प्लस हो जाएगा, हमें ऐड करना है सबका जी वाले वैल्यूज। तो यहाँ पे वन हो गया, एंड इसके लिए क्या होगा, टू होगा। तीन है, तीन दो बार ही आया है, तो ये होगा two। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, फोर। अब हम इसको किसी और तरीके से भी तोड़ सकते हैं ना, हमें तो मतलब रेंज बताना है कि इतने से इतने वैल्यूज तक पॉसिबल है कि नहीं, वैसे बताना है। तो इसको किसी और तरीके से तोड़ के देखते हैं। सो अगर ये वाला एरे वापस ले आ गए तो लेट्स से वी स्प्लिट इट, लेट्स से वी स्प्लिट इट लाइक दिस। यहाँ पर एक सब एरे हो गया एंड दिस इज अनदर सब एरे। इसके लिए अगर जी वाला वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँ तो वो वन होगा, क्योंकि सब एक ही बार आए हैं। इसके लिए जी वाला वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँ तो वो टू होगा ना, क्योंकि थ्री दो बार आया है, बाकी थोड़ा कुछ है नहीं। तो इनका अगर स्कोर निकाला जाए तो वो थ्री होगा। Eventually you will try out and like see the minimum value possible, like minimum कितना हो सकता है स्कोर मेरा, वो तुमको बेसिकली समझ में आने लगेगा तो तुम ट्राई करोगे तो। लाइक मैं अगर इस एरे को वापस अगर क्रिएट करूँ, लेट मी कॉपी दिस, बार बार क्रिएट नहीं करने के लिए। ओके सो लाइक दो तो एक्सट्रीम केसेस हो गए सबसे ज्यादा, कि एक ही एरे, एक ही सब एरे रहेगा, लाइक बेसिकली पूरा एरे ही सब एरे हो गया। सो दो एक्सट्रीम केसेस हो गए, कि ये जो पूरा एरे ये सब एरे ही है। तो इस केस में स्कोर का वैल्यू क्या होगा, कि इसमें तो मोस्ट अकरिंग एलिमेंट तीन ही बार आया है, तो इसमें स्कोर का वैल्यू तीन होगा ना। एंड सेकेंड केस जो हो गया, जो थोड़ा सा मतलब एक्सट्रीम हो गया, वो भी कि सारे सब एरेज में कन्वर्ट कर दो, लाइक यहाँ पर भी एक सब एरे क्रिएट कर दो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो लाइक एक एक एलिमेंट के सब एरेज हो गए, ये सब थोड़े एक्सट्रीम केसेस हो गए ना दोनों। सो इस केस में स्कोर कितना होगा,
लाइक अगर ये सब एरे एक ही एलिमेंट का सब एरे है तो मोस्ट ऑकरिंग एलिमेंट कितनी बार आया होगा, एक ही बार आया होगा। तो इसका सम करके भी जो है एन ही आएगा, लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर। तो इस केस में तो ये 5 है। तो अगर तुम देखोगे कि लाइक जितने वैल्यूज पॉसिबल है, अ, वो उसका मिनिमम बाउंड तो 3 आ रहा है। लाइक अगर तुम देखोगे तो उसका मिनिमम बाउंड जो है 3 आएगा। लाइक हमने जितने केसेस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, लाइक मैंने यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की, यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा, बहुत ट्राई किया, लाइक कितना वैल्यूज में जनरेट कर सकता हूँ कितना नहीं, चेक करने के लिए। तो इस केस में लाइक 3 आया, चलो ठीक है। इस केस में 4 आया। लाइक ये 3 से बड़ा ही आ रहा है हमेशा, एक चीज देखोगे तो। सो लाइक मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि मिनिमम वैल्यू जो 3 ही होगा। एंड वो लाइक एक्सट्रीम केस पे ही आ रहा है, मिनिमम वैल्यू 3 होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू पे जो है एक्सट्रीम केस पे ही आ रहा है। तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू एंड ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। ये पे जो एक एक्सट्रीम केस पे आया एंड ये भी एक एक्सट्रीम केस पे ही आ रहा है। एंड लाइक ऐसा है कि तुम 3 से तुम एक वैल्यू बढ़ा भी सकते हो। मैं कहीं पर भी तोड़ सकता हूँ लाइक एक वैल्यू बढ़ाने के लिए। लाइक 4 मैं कैसे भी करके ऑब्टेन कर ही सकता हूँ। हमारे केस में हमने 4 का एक एग्जाम्पल देखा है, राइट। 4 कैसे ऑब्टेन हुआ था। यहाँ पे 4 हमने ऑब्टेन कर लिया था कैसे न कैसे करके, स्प्लिट करके। तो 4 ऑब्टेनेबल है। लाइक बेसिकली मिनिमम के बाद तुम कितना भी ऑब्टेन कर सकते हो, तुम +1 करना है ना बेसिकली। तो तुम कहीं पर एक ब्रेक लगा दो सवेरे के बीच में तो ऑब्टेनेबल हो जाएगा कैसे ना कैसे करके। सो लाइक मिनिमम वैल्यू हमें पता है, मैक्सिमम वैल्यू पता है जो अचीवेबल है, एंड इसके अंदर के भी सारे वैल्यूज अचीवेबल होंगे समहाउ। सो सो अगर तुम्हें ये रेंज दिया हुआ है 3 से लेके 5 तक का, एंड लाइक बेसिक मैथ्स अगर तुम्हें आता है तो इनमें नंबर्स कितने आते हैं, लाइक 3 आता है। तो एंड इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 - 3 + 1 करके। सो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। सो मतलब हमें यही करना है। एंड ये 3 लाइक कैसे आएगा, मतलब ये 3 को तुम निकाल सकते हो, लाइक लोअर बाउंड को। 3 लोअर बाउंड कैसे होगा, लाइक पूरे एरे का मोस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है। तो वो होगा लोअर बाउंड, यहाँ पे अपर बाउंड होगा एरे का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एन है। सो एन माइनस मैक्सिमम एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी +1, बेसिकली यही है क्वेश्चन में। लेट मी डिस्कस द सॉल्यूशन। लाइक तुम यहाँ पर भी ट्राई करोगे तो यही सब होगा। एन तो हमारा 3 है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जो है वो 1 है, एंड 3 - 1 + 1 करोगे तो 3 आ जाएगा। लाइक तो यही सब केसेस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन तुम्हें देखने होंगे। अ, इसका कोड भी बहुत छोटा ही है क्योंकि कुछ है नहीं करने को इसमें। देन हमने इनपुट लिया एंड देन हमने लाइक एरे ले लिया। यहाँ पे ये मैप स्टोर करेगा फ्रीक्वेंसी, एक होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए वेरिएबल। सो लाइक यही सब है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ से कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। ये चीज़ तुमने शायद सीखा ही होगा पहले, हैशिंग वैशिंग मैंने सिखाया था सर। देन लाइक ये आंसर भी हमें मिल गया, डिस्कस कर लिया ये हमने। सो लाइक ये वाला प्रॉब्लम तो ये था डी तक। सो आई होप प्रीतम आई हैव क्लियर्ड योर डाउट्स, प्रॉब्लम समझ में आ गई। Thank you guys. I will be passing on the Swamiji. Uh, I think my screen is visible and am I audible to everyone? Just give a thumbs up. Yeah, right, Pritam. Okay, let us discuss the next problem, that is counting LCM easy. Okay, so, okay. Uh-oh. Okay, so let us look at the problem statement first. Yeah, right. So the chef has a favorite number z and he wants to count the number of pairs xy such that x is in the range 1 to z, both closed intervals, y is also in the closed interval, and LCM of xy is greater than z. So basically, we are given some z and we have to find x and y, where both x and y belongs to closed interval 1 to z,
and the LCM of both x and y must be greater than z. Okay, okay. So, have anyone tried to solve the problem or any approaches you got, any intuitions you made during solving the question? You can tell me anything or any brute force approach. Okay, the brute force approach is very easy. Like anyone? Okay, okay. Let us discuss. Okay, okay. So the brute force approach can be like you traverse x from 1 to z. Yeah, you traverse x from 1 to z, 1 to z, and also for each x you traverse y from 1 to z and find their LCM. And if it is greater than z, so you can increase the count plus plus. So you initialize a count variable, and yeah, you can return the c, the count. So basically, I have two nested loops, and my time complexity goes to O of z square. But the z is in the constant. If you look at the constraints, z is in the range 10 to the power 6. Yeah, 10 to the power 6. So it will exceed the time limit. So we have to think of any better solution. Okay, let us see how can we solve it optimally. So before going to the solution, can you tell me what is the, I think, total number of ordered pairs can I get x and y? Okay, where x is 1 to z and y is 1 to z. Okay, so x has can be assigned z values, y can be assigned z values. So total number of ordered pairs O can be z square. Okay, so out of that, if I can find the number of ordered pairs where the LCM is less than equal to z, okay, if I can find this thing, from that I can find my required answer where the LCM is greater than z is equal to nothing but z square minus LCM where it is less than equal to z. Okay, these are number of pairs. Number of pairs is number of pairs, right? So basically, my main aim became to find something like number of ordered pairs where my LCM is less than equal to z. Okay, okay. Let us try to break the problem into more subproblems. Okay, so if I can find my LCM, number of ordered pairs where LCM is equal to z, okay, if I can find this, so basically I can write LCM where number of ordered pairs where LCM is less than equal to z can be found by number of ordered pairs where LCM is equal to z plus number of ordered pairs where LCM is I think I'm audible to everyone, right? Okay, okay. I think the light switched off. I thought I left the meeting. Okay, so number of ordered pairs where the LCM is less than equal to z is nothing but number of ordered pairs where LCM is equal to z plus it is less than equal to z minus 1. So basically I can maintain a prefix array to do these things. Fine. Is it clear up to this? Is it clear up to this how I have broke the problem into first I found greater than z, then from that I found less than equal to z. Now I have to find like to maintain a prefix array. So my main aim became now LCM is equal to z. How can I found this? Okay, for this I will take an example because it is very good that we understand through small examples. Okay, right.
So let us assume that z equal to 6. Okay, so range of x becomes from x belongs to 1 to 6, and range of y becomes from 1 to 6 also. So what are the total number of ordered pairs? Total number of ordered pairs will be 36. 6 star 6, 36. But now tell me, if I want to find my LCM equal to z, LCM of x and y equal to z, we must ensure that one condition must be ensured, that both x and y at least divide z, right? Z modulo y must, at least these two conditions must be satisfied, right? Then if it is not satisfied, their LCM cannot be z. Okay, this is the one condition that it must satisfy first. Secondly, I must say that even if my both these conditions satisfy, it may not ensure that both of these LCM of x and y become equal to x. For example, if my x is something like 1 and y is something like 3, then their LCM is 3, which is not equal to 6. Even if both y, that is 3, and x both divide 6. Okay, so there's some intuition that, okay, first of all, for this purpose, that means my x and y must at least be divisors of 6. Divisors of 6, that is 1, 2, 3, 6. So I reduced my search space to either one, x must be either from this set 6, and my y also must be from this set. Fine. Okay. Now I have to find, how can I find this? Okay. Now I'm writing LCM of 6. Basically, okay, can you tell me now total number of ordered pairs? Now I can make, earlier it was 36, but from this condition, as I have said, that this condition at least must satisfy. Now I have reduced my search space to, like, there are 4 possibilities of x and there are 4 possibilities of y. So that means my total number of ordered pairs become 4 into 4, that is 16. But I have, from these ordered pairs, I have to subtract those ordered pairs where the LCM is either 1 plus where the LCM is either 2, or yeah, or where the LCM is either 3, right? If we closely observe these 1, 2, 3 are nothing but they are also the divisors of 6. These are nothing but divisors of 6. They all belong to this. Okay. So in this way, I have got an equation. So I can write LCM of I is nothing but is equal to D star D minus summation of LCM J, where D is nothing but the count of divisors of I, right? That is, here in this case it is 4, and my J is a divisor of I, right? Because in this case, when x was equal to 1 and y was equal to 3, their LCM was 3, because from these ordered pairs, LCM equal to 1 is also possible, LCM equal to 2 is also possible, LCM equal to 3 is also possible.
Okay, so we need to subtract those ordered pairs. Okay, and these are my total possible values. Okay, so basically from this we reduce to this search space, and from this search space, that was 4 into 4 cross 16, and we reduce to this. Okay, now you may wonder, okay, I've basically found how can I write the LCM thing, but how can I compute these beforehand? Okay, so to understand that, I will use the LCM equal. First, assume that okay, I've somehow found the LCM of 6. Okay, yeah, I've somehow found how I computed LCM of. I somehow found how I computed the LCM of 6. Okay, now tell me, if I write LCM of, if I try to compute LCM of 12, can I say that this term LCM of 6 must be there while I am writing number of ordered pairs of 12? In the same way, when I am computing LCM of 18, can I say this LCM of 6 term must be there? Because 6 is a divisor. So basically, for all multiples of 6, for any LCM of j, where j is a multiple of 6, multiple of 6, this LCM of j term, LCM of 6 term, we must subtract. Okay, so I'm getting the intuition how can I like compute this. Okay, just look at the code, you will understand more clearly. Okay, I think, yeah, I think, wait a minute. Yeah, let me do split screen. Yeah, right. So if you look at the code, yeah. So basically my D array, this is vector array. This D array count the number of divisors of 6. Okay, how this works, if I can tell you, suppose I am for 6 I'm computing. So 1, uh, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I start from 1, I equal to 1. For every multiple of I increase the number of divisor count. That is, this 1 is a divisor for every number from 1 to 6. So I basically increase their division count. I hope, am I clear up to till now? Am I clear till now? Okay, right. So this thing, this thing, wait, yeah, these things basically gives me the count of divisors. So I start from 1. So currently my count is 1, and this one contributes to the divisor count of every number since 1 divides everything. So this is 1, this is 1, this is 1, this is 1. Currently divisor count is 1. Then I got to 2, and for every multiple of 2, it increases its divisor count. So it increases the divisor count of 4, it increases the divisor count of 2, it increases the divisor count of 6. Then I move on to 3, it itself increases its divisor count, it increases the divisor count of 6, since 6 is its multiple. Then I went on to 4, it increases its divisor count, and then I went to 5, it increases the divisor count. So basically, finally, I got the divisor count. This is 1. 1 itself is a divisor of 1. Okay. 1 and 2 contributes to the divisor of 2. The count is 2. 1 and 3 counts for the divisor of 3. 1, 2, and 4 counts the divisor of 4. This is 3. 1 and 5 counts the divisor of 5. That is 2.
And also, okay, for 6 also itself is a divisor. So we got 4 value, 1, 2, 3, 6. Okay, so this way I have computed my divisor count array. Okay, then this pi is nothing but what I have computed here, this thing, LCM of I. This is my pi. Fine. And then what I have written, pi is equal to di star di. As I have told, di represents the divisor count of 6. So here d is a count of divisors. So I have written di star di minus ai. This thing, where the summation of all LCMJ, these things I have made another array A, and I have represented it by A of I. And then what I have done, you can see by this thing. So I have computed AJ. AJ is multiple of I. You can see from j equal to 2 star I. 2 star I means 12. Then till up to n, and I have taken 1 to the power 6, 10 to the power 6, because I am pre-computing things so that I can solve it in an optimal way. So basically what I have done, I have not computed for every test case. I have pre-computed the things for all n in the range for 10 to the power 6. 1e6 is basically 10 to the power 6. And then I have found the answer since I have pre-computed things in O of 1 time complexity. Okay. So where I was I? Yeah, here. So for every multiple of I am contributing this thing, P of I, this LCM of J, right? For every multiple of J, A of I must include LCM of J. Okay. In this way, I have computed my AI array. So you can see. So my PI done, AI is done. Okay. Now I have to again move on to that I have done. Okay. I have to maintain a prefix array. So this vector answer is my prefix array. And I have account for this answer I equal to answer I minus 1. But just I have written it. This is I, answer I minus 1, answer I minus 1, answer I, and this thing is my LCM equal to Z, PI, number of ordered pairs where LCM equal to Z. Okay. Now basically the last step, this is my answer. This is my answer. But I have exactly written here Z star Z, Z star Z square minus number of ordered pairs. LCM is less than equal to S, Z, that is answer Z. Okay. The time, if I like compute the time complexity, okay, just by looking at the code, for example, for this code, for every n, suppose I equal to 1, initially as I equal to 1, and I go from j equal to I till n, and my increment step is I. So basically for first round, I am going n steps. When I equal to 2, then to 2, 4, 6, 8. So basically I'm going n by 2 times. For I equal to 3, 3, 6, 9. So basically n by 3 times. So my overall time complexity will be n plus n by 2 plus n by 3 till and this is nothing but a harmonic series. If I take n in common, this is 1 plus half plus 1 by 3, and so on up to n by n. And this basically the time complexity comes as log n. So my overall time complexity is nothing but n log of n. Okay, right. Similarly for this also, for every I equal to 1, I'm going through all the multiples of I. This is also n log n. And basically for every test case, I pre-computed the things, and this can be done in O of 1. I'm just printing the result. Okay.
So in this way, I have like solved the problem. Okay, if you have any doubts, you can ask. It was a very good problem. Right. Okay. Thank you.